डन जय जय श्रीराम तो बीईडी एंट्रेंस पई जनरली साइंस पिला जो मन रहले तो ताको पई आमे गोटे सेशन आनी के आछी जोतरे की ऑल टू ऑल बीईडी रो जहा सिलेबस रहला तो अप टू एग्जाम पर्यंत कंप्लीटली वन बाय वन आमे सिलेबस कंप्लीट करि जिबा एंड जदि आमे देखिबा आज रहउची फर्स्ट चैप्टर अछि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रो कोन कोन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जोटा कि तमरो बीईडी प्रिपरेशन पई नियत रूप हेल्प करिवो ताको आमे डिस्कशन करबा तो फर्स्ट ये कंफर्म करो एंड ऑडियो वीडियो ठीक ठाक अछि देन आमे स्टार्ट करबा एंड मैक्सिमम पिला जते जॉइन हे परबे सो दैट सेट बेटर कमेंट सब ठीक ठाक आसुची ना पपर होची अच्छा पायल एंड सटाइट ये दीटा कमेंट आछा आ किसी कमेंट आसनी ओके तो कंफर्म करो कि दैट इज वीडियो ऑडियो ठीक ठाक अछि देन हमें एज यूजुअल स्टार्ट करिया ओके रुचिस्मिता प्रणाम यस प्रणाम 12 वाचिंग एंड ट्राई करिया कि मैक्सिमम पिला जॉइन करंतु देन हमें स्टार्ट करिया फर्स्ट क्वेश्चन हम पाकरे ओके तो प्रथम क्वेश्चन अछि व्हाट इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट मींस यूकैरियोटिक सेल रे मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटी कोड हुए देखो मु जदि तुमको गोटे कथा फास्ट नोट डाउन करिया को चाहिबी तमे जदि बीड रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबो तो निहात रूप रे गोटे कंक्लूजन पाइबो बीड रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखिबो मैक्सिमम क्वेश्चन इनसाइट रू ही आसुची मैक्सिमम इनसाइट रू एंड एको बीड रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइव हमें देखै परिया मैक्सिमम क्वेश्चंस आर अराइजिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक सो स्ट्रिक्टली तुमको गोटे जिंस को माइंड रखिया पड़िबो एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली फॉलो अप करिवो एनसीईआरटी लाइन को नेकी क्वेश्चन आसुची तो प्रथम क्वेश्चन तुम पाकर अछि चलो व्हाट इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन यूकैरियोटिक सेल दैट मींस यूकैरियोटिक सेल बा जो सेल रो न्यूक्लियस टा वेल डिफाइंड थाए यूकैरियोटिक सेल रो को एरिया जोटी की मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटी हुए आई होप समस्त को आंसर आस्तिबो कोन हबो ज्योति प्रभा शिवानी आंसर कोन हबो दैट इज टिके एटा तळुक नै जे जेमति कि तुम परफेक्टली आंसर टा शो करिवो ऑप्शन गुडा को न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म ऑल ऑफ दिस देन हियर द आंसर इज ऑल ऑफ दिस सॉरी साइटोप्लाज्म द आंसर इज साइटोप्लाज्म स्ट्रिक्टली मन रखिवो दैट इज साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया where is the maximum cellular activity takes place perfect okay next question jiba in eukaryotic cell where does the various chemical reaction occurs to keep the cell in a living state कोठी generally same question but टिके बुले करी खाली देछि eukaryotic cell रे को जगह रे various chemical reaction हुए जोटे कि cell को living state रे रखिया पे कोन आंसर same answer that is okay तो that is answer होची कोन साइटोप्लाज्म नेक्स्ट जिबा how many of the following organelle are found in prokaryotic cells जनरली को organelle गुडा को prokaryotic cell रे मिले आंसर दियो तापर मु गोटे बढ़िया ट्रिक कहबी को organelle prokaryotic cell रे मिले एंड को organelle prokaryotic cell रे मिले हमकु तो बेसिक जिंस आईडिया एति कि मन थिबो कि prokaryotic cells कोन एंड eukaryotic cells कोन बोली ठीक अछि एंड हम जानि छे prokaryotic cell रे दैट इज न्यूक्लियस टा वेल डिफाइंड नो एंड न्यूक्लियस जगह रे न्यूक्लियड देखा जाए ठीक अछि इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियड देखा जाए दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यू हैव टू रिमेंबर न्यूक्लियस जगह रे प्रोकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियड देखा जाए एंड स्ट्रिक्टली मन रखिबो ऑल ए लाइन टा बहुत इंपोर्टेंट ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर absent in prokaryotic cells all membrane bound organelle जेति की हमर सेल भितरे membrane bound organelle रहिले सब membrane bound organelle prokaryotic cell रे absent टिके बढ़िया से मन रखो सेल भितरे सिंगल membrane bound organelle सब किए मन रखिवो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल membrane गोल्गी बॉडी लाइसोसोम एंड वैक्यूल स्ट्रिक्टली मन रखिबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी लाइसोसोम वैक्यूल एमान होचन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सेही बेला जदी हमें देखिबा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली किए मन रखिबो एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसलिंग जदी मन रखिया न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट तो स्ट्रिक्टली मन रखिया न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये होचंती डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली so single membrane bound organelle हो किंबा double membrane bound organelle हो all the membrane bound organelle either single membrane or double membrane सब जगह absent होचंदी prokaryotic cell तर आंसर कोन हबो where the ताले कोन हबो endoplasmic reticulum single membrane absent थिबो Golgi body
सिंगल मेम्ब्रेन एब्सेंट काहे ना मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट माने से सिंगल मेम्ब्रेन हो कि डबल मेम्ब्रेन हो लाइसोजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन एब्सेंट माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट एंड दैट इज वैक्यूल एंड माइक्रोबॉडी कोन आंसर समस्त के आंसर दैट इज 0 यस यदि हम देखिबा दैट इज ऑप्शन डी दैट इज 0 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा where are the ribosome found in prokaryotic cell रे राइबोसोम कोठी देखा जाय where is the ribosome found in prokaryotic cell आंसर कोन हबो राइबोसोम कोठी देखा जाय प्रोकैरियोटिक सेल रे आंसर दियो राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल कोन हबो आंसर राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल कोठी that is cytoplasm chloroplast mitochondria na all of this answer kon hela chloroplast ribosome found in prokaryotic cell second question achi ribosome found in eukaryotic cell so this is the difference between the ribosome are present in prokaryotic as well as eukaryotic so kon haba answer dio payal ruchismita satite answer dio baki chatting पर निज निज भीतर करिवो आसो साइटोप्लाज्म यस परफेक्ट प्रोकैरियोटिक सेल रे राइबोसोम देखा जीवो साइटोप्लाज्म रे अच्छा एठी मतलब आ गोटे क्वेश्चन जै तुम पचारिबी प्रोकैरियोटिक रे देखा होतिबा राइबोसोम दैट इज 70s राइबोसोम ना 80s राइबोसोम कोन हो आंसर को प्रोकैरियोटिक रो राइबोसोम 70s ना 80s हु कैन से 70s राइबोसोम ना 80s राइबोसोम देखा जाय प्रोकैरियोटिक सेल रे दैट इज हम जानि छे आंसर दियो प्रोकैरियोटिक सेल रे राइबोसोम देखा जाए 70s एंड यूकैरियोटिक रे राइबोसोम देखा जाए 80s स्ट्रिक्टली मन रखिया पड़िवो आ निहात रूप रे बीड रे तमर एटा बढ़िया क्वेश्चन राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल रे कोठी देखा जाए पूरा मन रखियो साइटोप्लाज्म रे एंड जो राइबोसोम देखा जाए सेटा 70s राइबोसोम ना 80s राइबोसोम तो मन रखियो 70s राइबोसोम जनरली प्रोकैरियोटिक सेल रे देखा जाए एंड 80s राइबोसोम देखा जाए यूकैरियोटिक सेल हला मन रहिबो this is the one of the most important question Bhimesh Vibhu Kishore okay then आउ गोटे कथा मन रखिबो पूरा डायरेक्ट इनसाइड रो लाइनिंग कोठी जनरली यूकैरियोटिक सेल रे राइबोसोम मिले हला देखो प्रथम क्वेश्चन हमें कले प्रोकैरियोटिक सेल रे को ऑर्गेनेल गुडा का एब्सेंट तो हमें मन रखिले ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो किंबा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किए डबल मेम्ब्रेन बाउंड किए ऑर्गेनेल मन रखिया पे कहली तो सही अनुसार एंड सेकंड क्वेश्चन देखिले राइबोसोम टा प्रोकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल रे कोठी ऑल ऑफ दिस स्ट्रिक्टली मन रखिबो इनसाइड रे ओटा लाइनिंग अछि राइबोसोम फाउंड बढ़िया लाइन टा एटा राइबोसोम फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म केवल साइटोप्लाज्म रे देखा जायनी but also within the two organelle that is chloroplast and mitochondria strictly मन रखिबो यूकैरियोटिक सेल रे राइबोसोम साइटोप्लाज्म रे देखा जाय as well as chloroplast देखा जाय as well as mitochondria देखा जाय पूरा परफेक्टली मन रखो राइबोसोम फाउंड not only in the cytoplasm but also within the two organelle that is chloroplast and mitochondria तो all of these answer ठीक अछि एटा बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन आ एथिरे जदी भूल हबो तो प्रिपरेशन रो कोठी ना कोठी क्वेश्चन मार्क आसीबो तो नियत रूपे मन रखिबो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल रे नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हला बार बार लाइन कहूची सो इंपोर्टेंट देन नेक्स्ट बा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ भितरु केते जण मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हला से सिंगल मेम्ब्रेन हो किबा डबल मेम्ब्रेन हो तमे देखो कि आ भितरु केते जण मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कोन आंसर केते जण होचंदी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ओके कोन हो आंसर दैट इज हमें जानि छे लाइसोसोम टा होचे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड मु तो ऑलरेडी कहली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी लाइसोसोम एंड वैक्यूल एमान होचंदी दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल एज वेल एज सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किए एनएमसी मन रखिबो न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया शॉर्ट रे माइटो लिखि दोजी एंड क्लोरोप्लास्ट ठीक अछि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड
जो ऑर्गेनेल चारिपटे कौन सी मेम्ब्रेन नहीं दैट इज हम जो देखिबा एनआरआई कोटा न्यूक्लियोलोस राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी एंड सी पर होची सेंट्रोजोम। तो नियत रूप पचारला कि आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेन राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैक्यूल वैक्यूल होची सिंगल मेम्ब्रेन। सो कौन कौन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल और लाइसोसोम। सो आंसर कौन हो 3 आई थिंक समस्त आंसर 3 आस्तिबो परफेक्ट यूनिक स्टार सैटेलाइट विभू किशोर एंड एनआरआई कोटा पायल बढ़िया अछि। सो आंसर होची 3 हैला। तो देखो बीडी रे गोटे कॉमन क्वेश्चन सब पचारे कि को माने होचोनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड को माने होचोनी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ को माने होचोनी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सो स्ट्रिक्टली तो मन रखियो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड किए डबल मेम्ब्रेन बाउंड किए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किए दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बीडी एंट्रेंस ओके। तो मन रहिला तो नेक्स्ट जीवा देखो ए क्वेश्चन पचारि परियो एट तुमको आ गोटे क्वेश्चन सपोज पचारो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ भितर को ऑप्शन टा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नुह ऑप्शन देला सपोज न्यूक्लियोलोस राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी देन माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुह आक भितर कोटा गोटे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नुह हु कैन से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए नॉट ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आंसर कौन हबो ए जो क्वेश्चन पचारली आ भितर कोटा गोटे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नुह न्यूक्लियोलोस राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए नॉट ए अर्पिता इट्स ओके आंसर दियो। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ भितर कोटा नुह माइटोकॉन्ड्रिया राइट माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल स्ट्रिक्टली मन रखिबो माइटोकॉन्ड्रिया ने बढ़िया क्वेश्चन पचारि हेबो दैट इज जेम कहबा पावर हाउस ऑफ सेल बोली का कहे पावर हाउस ऑफ सेल हु कैन से पावर हाउस ऑफ सेल व्हिच ऑर्गेनेल जनरली इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल power house of cell is mitochondria perfect because as you know that is the glycolysis occurs in cytoplasm Krebs cycle occurs in matrix of mitochondria and the electron transport chain or oxidative phosphorylation जो तरह की maximum ATP production हुए कोठी ना mitochondria inner membrane रे जेहेतु mitochondria ATP production करियार main source so that it is called as energy that is the power house of cell ठीक अछि ओके बढ़िया नेक्स्ट जीवा ठीक अछि चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हला सिंगल मेम्ब्रेन मन रखिबो नॉन मेम्ब्रेन रखिबो डबल मेम्ब्रेन मन रखिबो चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल सेल केवल एंड केवल एनिमल सेल रे मिले कोन आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फाउंड इन एक्सक्लूसिवली इन एनिमल सेल रे कोटा केवल मिले प्लांट रे मिलेनी किबा बैक्टीरिया रे मिलेनी एनिमल सेल रे मिले कोन आंसर को लिपिका दैट इज सेंट्रियोल ओके। तो आमे जानिचे जदी देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट सेल रे मिले देखो माइटोकॉन्ड्रिया ऑल यूकैरियोटिक सेल रे मिले जेति की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रहिले से माने प्रोकैरियोटिक सेल रे मिलंतिनी किंतु यूकैरियोटिक सेल मिलंती तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल रे मिलंती माने एनिमल भी गोटे यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट रे भी गोटे बट हमहु पछा केवल एनिमल रे तो ये तो प्लांट रे मिलुची एनिमल रे मिलुची तो एटा भी हबोनी केवल एंड केवल एनिमल रे क्लोरोप्लास्ट जो देखिबा क्लोरोप्लास्ट प्लांट रे मिले एंड वैक्यूल जो देखिबा दैट इज बोथ प्लांट एंड एनिमल रे मिले एनिमल रे दैट इज जो देखिबा छोटो टिनी वैक्यूल मिले प्लांट रे ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिले एंड सेंट्रियोल दिस इज अ परफेक्ट आंसर सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनेल व्हिच इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन सर जेमिति नीट रे क्वेश्चन रिपीट हुए बीड रे देखो बीड क्वेश्चन रिपीट बहुत सारे एग्जामिनर चाहन जो माने एग्जाम कंडक्ट करनती से माने चाहंतिन केवल क्वेश्चन रिपीट हो बोली बट से क्वेश्चन को हम एनालिसिस करि पारे लेवल क्वेश्चन को बेला पड़े ठीक अछि आंसर आर कोन हबो सेंट्रियोल स्ट्रिक्टली मन रखिबो। अच्छा मु एठी आ गोटे क्वेश्चन जदी एडिशनल करी तुम पचारिबी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल को ऑर्गेनेल बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल मिले ऑप्शन दोची सेलुअल बोथ प्लांट एंड एनिमल मिले क्वेश्चन ऑलरेडी कहिछि सुनिछो तो ऑप्शन देखो सेलुअल
राइबोसोम, देन थर्ड वन इज बोथ प्लांट एंड एनिमल हैला, सेंट्रोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, कोटा बोथ प्लांट एंड एनिमल रे मिले। व्हाट विल योर आंसर हियर? व्हिच ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? कोन आंसर? सेलुअल। सेलुअल कोन बोथ प्लांट एंड एनिमल रे मिले? सेलुअल टा हम जानि छबा, सेलुअल टा प्लांट सेल रे एब्सेंट है, तो सेलुअल तो केबे भी होबनी आंसर। तो कोन आंसर को? राइबोसोम। देखो यस हमें जानि छे सेलुअल टा प्लांट सेल रे मिले बट एनिमल सेल एब्सेंट। राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेल जोटा कि यूकैरियोटिक सेल रे मिले, आ जो प्लांट एंड एनिमल बोथ रे मिलिबो राइबोसोम। सेंट्रोसोम जो देखिबा दैट इज एनिमल सेल रे मिले, क्लोरोप्लास्ट जो देखिबा प्लांट सेल रे मिले, तो आंसर इज राइबोसोम। ठीक अछि। तापर एठी आ गोटे क्वेश्चन पायल, स्वप्ना, प्रियदर्शिनी, लक्ष्मी प्रिया, शशिरेखा, स्वप्ना, रुचिस्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हम पचारिया मते को दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल का हुआ जाए? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल आंसर ऑप्शन दोचे एनएडीपी, एनएडीएच, एडीपी ना एटीपी। व्हिच वन इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल का हुआ जाए? दैट इज एटीपी। ओके, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना साइटोप्लाज्म? लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना साइटोप्लाज्म ना मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? कौन होगा आंसर? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो तापर क्वेश्चन आंसर दियो, कलर चेंज कर दवा। 22 वाचिंग, एते कम पिला कोन? इनर मेम्ब्रेन, दैट इज स्ट्रिक्टली मन रखिया, large amount of ATP production takes place in inner membrane of mitochondria जोठी की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुई। ठीक अछि, चलो ओके हमर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। तो तम पारे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट चूज करो। यार आंसर हैला सेंट्रियोल। बढ़िया, आर इनकरेक्ट स्कूल करो। स्मॉलेस्ट सेल किए, लार्जेस्ट सिंगल सेल किए, स्मॉलेस्ट सेल किए, नॉन ऑफ दिस इनकरेक्ट पचारछि। पढ़ो कोन हबो? प्रज्ञाश्री, शशिरेखा, हरप्रिया। आंसर पढ़ो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? हमें जानि छे स्मॉलेस्ट सेल किए? दैट इज माइकोप्लाज्मा। यस, तो स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच। परफेक्ट अछि, ऑस्ट्रिच रेक। एंड स्मॉलेस्ट सेल इज बैक्टीरिया। तो सेमिति तो किछि मेंशन करायनी, स्मॉलेस्ट सेल बोले हम बैक्टीरिया कहि परनी। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा अछि स्मॉलेस्ट सेल, सो एटा हम इनकरेक्ट हेइ परिबो। स्मॉलेस्ट बोले हम कहि परनी, ऑल बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट नो। तो नियत रूपरे तो आंसर होची कोन ना इनकरेक्ट पचाची, माने एटा ही इनकरेक्ट हेइ परिबो। नॉन ऑफ दिस नो। देखो एटी जदी क्लियरली क्लासिफाई कराइ तांता को बैक्टीरिया बोली, ताले मे भी करेक्ट हेइ परतांता। सो नियत रूपे स्मॉलेस्ट सेल होची माइकोप्लाज्मा हमें जानि छे, लार्जेस्ट सिंगल सेल होची ऑस्ट्रिच। मु एटी जदी गोटे क्वेश्चन तुमको एडिशन देबी, दैट इज लॉन्गेस्ट सेल की? लॉन्गेस्ट सेल का को जे? व्हिच सेल इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट सेल? कोन आंसर? देखो बैक्टीरिया सेल स्मॉलेस्ट, स्वप्न तमर बैक्टीरिया सेल स्मॉलेस्ट, बट किछि क्लियरली लिखा है कि को बैक्टीरिया कोन सब बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट सेल सेम कहि होबनी। एंड लॉन्गेस्ट सेल होछि कोन? दैट इज नॉर्म सेल। परफेक्ट। तापर मते को माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा रा सेलुअल प्रेजेंट और एब्सेंट? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन। सेलुअल इज प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा और एब्सेंट? सेलुअल प्रेजेंट और एब्सेंट, हु कैन से? माइकोप्लाज्मा रे सेलुअल टा प्रेजेंट थाए ना एब्सेंट थाए? कोन आंसर को? सबिता, सोनालिका, दैट इज परफेक्ट। इन माइकोप्लाज्मा द सेलुअल इज एब्सेंट। स्ट्रिक्टली मन रखिया पड़ो, माइकोप्लाज्मा रे सेलुअल एब्सेंट। बढ़िया हला, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। अच्छा मते एटा आउट कहला सिंपली क्वेश्चन ओटा पचारिया। तो मते कोइ कि जनरली सेल थ्योरी को दि जण साइंटिस्ट सेल थ्योरी देथिले? हु वेयर द टू साइंटिस्ट दैट इज सेल थ्योरी देथिले? के साइंटिस्ट? रॉबर्ट हुक ना के साइंटिस्ट को दि जण साइंटिस्ट थिले जे कि सेल थ्योरी देथिले? एंड समस्त का आंसर आसला दैट इज कोन? स्केल्डन एंड स्क्वान। सो स्ट्रिक्टली मन रखिबो स्केल्डन एंड स्क्वान। तो स्केल्डन थिले जर्मन रो बोटानिस्ट एंड स्क्वान थिले दैट इज जण जूलॉजिस्ट। सो स्केल्डन एंड स्क्वान को द्वारा सेल थ्योरी दियाइतला। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिया देखो ऑप्शन को जिया पूर्व कौन कौन माइंड को आसी क्वेश्चन ताको भी रिवीजन करिया तो मते को कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए करथिले हु आर द साइंटिस्ट जे कि सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करथिले सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किए करथिले ऑप्शन दोची रॉबर्ट हुक ना दैट इज हमें कहबा रॉबर्ट ब्राउन किए सेल थ्योरी को मॉडिफाई करथिले कोन आंसर सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए करथिले जॉर्ज पालेटे Rudolf Virchow yes perfect that answer is Rudolf Virchow perfectly मन रखिबो Rudolf Virchow जे कि साइंटिस्ट थिले जे कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई करथिले एंड दिस इज द यूनिक क्वेश्चन रॉबर्ट ब्राउन दैट इज न्यूक्लियस डिस्कवर करथिले सो रॉबर्ट हुक होचे नॉन लिविंग सेल एंड आउ जनकर कमेंट आस्थिला दैट इज कोन जॉर्ज पालेटे होचे राइबोसोम डिस्कवर करथिले राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पालेटे and Rudolf Virchow जे कि omnicellular e cellula कहितले बा all the cells are arising from the pre existing cell प्रत्येक सेल ता पूर्व सेल रो आसिले सेल थ्योरी को मॉडिफाई करबा कथा जीव जदी स्ट्रिक्टली मन रखियो Rudolf Virchow को सेल थ्योरी होची स्केलेटन एंड स्क्वान को जॉर्ज पालेट होची राइबोसोम को रॉबर्ट ब्राउन होची न्यूक्लियस को हला चलो ओके बढ़िया अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ओके व्हिच इज द लेंथ ऑफ अ माइकोप्लाज्मा जो रहिला स्मॉलेस्ट सेल तो माइकोप्लाज्मा रो लेंथ केते 300 माइक्रोमीटर 0.3 माइक्रोमीटर सॉरी मिलीमीटर ना 300 सेंटीमीटर ना ऑल ऑफ दिस कोन हबो आंसर कोन हबो को 0.3 माइक्रोमीटर परफेक्ट बढ़िया 0.3 माइक्रोमीटर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा को नेकी क्वेश्चन पचारे एइटे आ गोटे बढ़िया क्वेश्चन तुम पचरा जीवो 32 वाचिंग आके देखिया केते जण परफेक्टली करछो बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया काहा को नेकी सेलुलोज ना दैट इज काइटिन ना पेप्टिडोग्लाइकन कोन आंसर कहा को नै की दैट इज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया सेल मेड अप ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड परफेक्ट दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन एंड एई गोडा आ गोडा क्वेश्चन पचारिया जदी तमे बैक्टीरिया रे सेल वॉल को डाइजेस्ट करिया को चाहो छ को एंजाइम दबो सपोज बैक्टीरिया सेल को तमे बैक्टीरिया सेल रो सेल वॉल को सपोज दिस इज द बैक्टीरिया सेल वॉल एंड बैक्टीरिया रो सेल वॉल को डाइजेस्ट करिया पई को एंजाइम दबो ऑप्शन दोची लाइसोजाइम काइटिनेज that is cellulase which enzyme is directly responsible to digest the cell wall of bacteria कौन आंसर bacterial cell wall को fungus by chitin perfect that is here answer is lysozyme strictly मन रखिबो that is human tear as well as that is जदी हमें कहिबा tear and in our saliva that is the lysozyme is present and the most important function of lysozyme जे कि आखिर लुहरे थाए कांदिवा फल रे किबा पार्टी रे जो लाइसोजाइम अछि बा सालाइवर जूस रे बैक्टीरिया को किल करे बा बैक्टीरिया रे सेल वॉल को डाइजेस्ट करे तो स्ट्रिक्टली मन रखिबो बैक्टीरिया रे सेल वॉल को डाइजेस्ट करे पे लाइसोजाइम इंपोर्टेंट फंगस रे सेल वॉल जेतु काइटिन को नै तयारी तो फंगस रे सेल वॉल को डाइजेस्ट करे पे काइटिनेज प्लांट रे सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज तो ताको डाइजेस्ट करे पे सेलुलेज सो सल्ला एंड एटी मते को कि एनिमल रे सेल वॉल को डाइजेस्ट करे पे What is the particular enzyme directly responsible for to digest the cell wall of animal cell? कौन आंसर? रोजालिन, जीवी ब्लॉक्स, अर्पिता, शशिरेखा, रुचिस्मिता, सौरभ, yes सौरभ. कौन आंसर? That is मते को कि एनिमल सेल को डाइजेस्ट करिया पई ग्लाइकोजेन एनिमल सेल वॉल को डाइजेस्ट करिया पई as you know that the animal cell there is no cell wall. Yes perfect सौरभ. चलो पायल बढ़िया अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. A polysome is a chain structure of which organelle? Generally, polysome ta co-organelle. Polysome is a chain structure of which organelle? Polysome ta co-organelle ର chain structure को कौन आमे जे देखिबा polysome होची several कौन आंसर perfect that is ribosome perfect. As you know that several ribosome attached with a single mRNA. What a single mRNA रे several ribosome रो दीटा सब यूनिट larger smaller
तो सेवराल राइबोसोम जेतबे गोटे सिंगल एमआरएनए रे अटैच हेकि थांती ताकू कहा जाय पॉलीजोम, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम इज ए चेन स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच ऑर्गेनेल राइबोसोम। सेवरल राइबोसोम अटैच। अच्छा मते को कि यूकैरियोटिक राइबोसोम एटीएस। अच्छा ना ना क्वेश्चन ता जदि हम पचरा जीवो यूकैरियोटिक राइबोसोम रो सब यूनिट दिटा कोन कोन ऑप्शन दोची। यूकैरियोटिक राइबोसोम रो सब यूनिट ऑप्शन यूकैरियोटिक राइबोसोम सब यूनिट 60s 80s 60s 30s 60s 40s 60s 60s यूकैरियोटिक राइबोसोम रो सब यूनिट। व्हाट आर द टू सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम? आमे जानिचे यूकैरियोटिक राइबोसोम केते 80s। as you know that 80s रो दीटा सब यूनिट कोन कोन 60 plus 40 काहे ना हमें जानिचे इन मैथमेटिक्स दैट इज 60 plus 40 equal to 100 बट इन बायोलॉजी 60 plus 40 दैट इज 80। बढ़िया अछि। ओके सौरभ ठीक अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। In polysome, the ribosome attached to which RNA? हमें जानिचे RNA that is rRNA is there, mRNA is there, as well as tRNA is there. तो polysome रो जो concept है जनरली को राइबोसोम का आसुची बा को RNA को नेकी तयारी ऑलरेडी हमें कहिले several ribosome yes सबिता परफेक्ट अछि। प्रोकैरियोट 50s and 30s यूकैरियोट ठीक अछि। कोन हबो mRNA। Here is answer mRNA. Okay, next question chalo. In what form the reserve material in prokaryotic cells are stored in cytoplasm? Prokaryotic cell रे बा bacteria cell रे reserve material टा को form रे store होइकरे lysosome ना ribosome ना mesosome ना inclusion body। कोन आंसर? one of the easiest question I think। प्रोकैरियोटिक सेल रे रिजर्व मटेरियल टा को फॉर्म रे स्टोर हेकि रही कोन आंसर को एटा ठीक नै जियो इंक्लूजन बॉडी। परफेक्ट आंसर इज इंक्लूजन बॉडी। एठी चारटा क्वेश्चन तुम पचारिया। फर्स्ट क्वेश्चन जे तुम पचारा जीवो मेसोसोम, मेसोसोम टा प्रोकैरियोटिक सेल रे देखा जाए ना यूकैरियोटिक सेल रे? फर्स्ट क्वेश्चन को मेसोसोम it is found in prokaryotic cells ना eukaryotic cells? कोन हबो मेसोसोम टा प्रोकैरियोटिक सेल ना यूकैरियोटिक सेल? मेसोसोम फाउंड इन yes that is right answer। मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेसोसोम टा सेल वॉल रो एक्सटेंशन प्रोकैरियोटिक सेल रो सपोज एटा होची सेल वॉल एंड एटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल रो सेल वॉल रो एक्सटेंशन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन कहार एक्सटेंशन? आमे जानिचे मेसोसोम इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन सबुठार स्ट्रिक्टली मन रखिबो मेसोसोम टा प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाए एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन। ठीक अछि समस्त आंसर बढ़िया दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन। देन दीटा क्वेश्चन हला। तीनटा क्वेश्चन जे तुम पचरा जीवो एठी को कि राइबोसोम इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ना सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ना नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? तापर क्वेश्चन जो राइबोसोम की डिस्कवर करथिले। देन तापर को कि राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल रे कोठी मिले? तीनटा क्वेश्चन राइबोसोम को नेकी। फर्स्ट क्वेश्चन राइबोसोम डबल मेम्ब्रेन ना सिंगल मेम्ब्रेन ना नॉन मेम्ब्रेन? राइबोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन। सौरभ राइबोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन। राइबोसोम इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो राइबोसोम टा जनरली के डिस्कवर करथिले? हु डिस्कवर्ड राइबोसोम? सेकंड क्वेश्चन राइबोसोम के डिस्कवर करथिले? जॉर्ज पालेटे सबिता परफेक्ट अछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थिला राइबोसोम टा यूकैरियोटिक सेल रे कोड देखा जाए? साइटोप्लाज्म रे केवल ना क्लोरोप्लास्ट रे ना माइटोकॉन्ड्रिया ना ऑल ऑफ दिस? राइबोसोम फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म ना क्लोरोप्लास्ट ना माइटोकॉन्ड्रिया ना ऑल ऑफ दिस? कोन आंसर देखे के जन का आंसर ठीक अछि। यूकैरियोटिक सेल रे स्वप्ना क्वेश्चन बोल से सुनो राइबोसोम फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, इन न्यूक्लियस ओनली, in chloroplast only, in mitochondria only? All of this that is ribosome found not only in the cytoplasm but also within the two organelles that is chloroplast and mitochondria. So strictly मन रखिबो all of this. But in prokaryotic cells it is found in cytoplasm जोटा कि 70s ribosome and subunits are 50 and 30. Okay बुझी होची तो बाकी देखो टिके जस्ट खाली रिव्यू नबा
जहां भी हमें डिस्कशन करछे तुमको कथाटा स्पीड सुना तो माने मु स्पीड कहूनी तो हां स्वप्ना दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम साइटोप्लाज्म एंड यूकैरियोटिक सेल रे साइटोप्लाज्म देखा जिवो माइटोकॉन्ड्रिया देखा जिवो एज वेल क्लोरोप्लास्ट देखा जिवो ऑल ओके ठीक अछि ओके तो स्वप्ना ही केवल दैट इज तुम स्पीड सुना छी ठीक अछि यस सर एवरीथिंग इज ओके थैंक यू हरप्रिया नो सर ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन तो मन रखियो हला इंक्लूजन बॉडी को नहीं बढ़िया क्वेश्चन सब पचारे कि इंक्लूजन टा अच्छा अच्छा एमिति पचारे इंक्लूजन टा प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाए एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोटिक सेल ना एक्सक्लूसिवली यूकैरियोटिक सेल्स ना बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इंक्लूजन बॉडी फाउंड केवल एंड केवल प्रोकैरियोटिक ना केवल एंड केवल यूकैरियोटिक ना बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कौन आंसर आंसर दियो सौरभ दैट इज प्रोकैरियोटिक ओके बढ़िया अछि मेसोजोम को नहीं क्वेश्चन पचारलो मेसोजोम होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन आको मन रखिबो एंड लाइसोजोम अच्छा एठी आ गोटे क्वेश्चन पचारिया जनरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए भितर को ऑप्शन को कहा जाय सुइसाइडल बैग बोली काहा कहा जाय लाइसोजोम ना राइबोसोम ना मेसोजोम ना इंक्लूजन बॉडी व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज द सुइसाइडल बैग व्हिच सेल ऑर्गेनेल सोम्याश्री हेलो व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज suicidal bag of cell that is lysosome okay next question that is lysosome pH केते जदि हम देखिबा lysosome रो pH acidic pH ना basic pH what will your answer here lysosome the pH of lysosome that is acidic content or basic content orpida that is 4.5 then the answer is 4.5 माने lysosome रो pH होची acidic बढ़िया okay चलो नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली आर नॉट इंक्लूजन बॉडी आंको भितर कोटा गोटे इंक्लूजन बॉडी नुह डायरेक्ट एनसेटर लाइनिंग हैला जदि तुम सेल चैप्टर देखिबो सेल चैप्टर इंक्लूजन बॉडी देखिबो इंक्लूजन बॉडी टा प्रोकैरियोटिक रे रिजर्व फूड मटेरियल टा इंक्लूजन बॉडी आकार रुहे प्रोकैरियोटिक सेल रे रिजर्व फूड मटेरियल इंक्लूजन बॉडी फॉर्म रे मिले एंड इंक्लूजन बॉडी रो जदि हम एग्जांपल देखिया फॉस्फेट ग्रैन्यूल सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल बट ग्लूकोज ग्रैन्यूल इज that is glucose granule टा नुह तार कोन आंसर ओके तो आंसर कोन हला ग्लूकोज ग्रैन्यूल बढ़िया अछि तो हियर द आंसर इज ग्लूकोज ग्रैन्यूल परफेक्ट चलो नेक्स्ट बा गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन जनरली गैस वैक्यूल कोड देखा जाए ब्लू ग्रीन पर्पल ना ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ना ऑल ऑफ दिस देखो सब जाय क्वेश्चन जदि हम देखिया पूरा डायरेक्टली इनसाइटर ताले आंसर कोन हबो लिपिका सौरभ रोजालिनी स्वप्ना पायल सौरभ जीबी लक्ष्मी रुचिस्मिता दैट इज आंसर होची ऑल ऑफ दिस तो स्ट्रिक्टली मन रखिया दैट इज गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन ऑल ऑफ दिस सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस बढ़िया अछि अच्छा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ला जनरली जो देखिबा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कोतरे देखा जाए प्लांट सेल ना एनिमल सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल प्लांट सेल ओके देन मते को कि गोटा क्वेश्चन पचार छेटी ऑप्शन दोजी काहार आउटर लेयर होची टोनोप्लास्ट 1 सेकंड टोनोप्लास्ट काहार टोनोप्लास्ट काहार आउटर कवरिंग दैट इज वैक्यूल ना राइबोसोम ना माइटोकॉन्ड्रिया काहार आउटर लेयर को हमें टोनोप्लास्ट बोली कहया परफेक्ट दैट इज वैक्यूल ओके देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू यूकैरियोटिक सेल्स आगे भीतर कोटा यूकैरियोटिक सेल नो एंड याटर इजीएस्ट क्वेश्चन है दुनिया रे ही नाही कोटा होची यूकैरियोटिक सेल नो which of the following option is not belong to eukaryotic cells कोन आंसर बैक्टीरिया that is कोन आंसर बैक्टीरिया परफेक्ट बैक्टीरिया अच्छा मते को कि न्यूक्लियट नॉट न्यूक्लियस न्यूक्लियटा जनरली प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाए ना यूकैरियोटिक सेल देखा जाए याको नै कि बैक्टीरिया को नै कि हम चारटा क्वेश्चन पचारे जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारि हबो तो को कि जनरली न्यूक्लियटा कोथरे प्रोकैरियोटिक सेल रे कैरेक्टरिस्टिक्स ना यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स सेकंड वन क्वेश्चन जदी बैक्टीरिया को नै पचारिया
को बैक्टीरिया व्हिच इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर, नेम ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर, को बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक इन नेचर, द बैक्टीरिया व्हिच कैन डू फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया व्हिच कैन डू फोटोसिंथेसिस कोन आंसर रोजालिन सबिता अर्पिता ब्लू ग्रीन एल्जी, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्जी बा तक हम सियानो बैक्टीरिया बोली कहउचे, तो सियानो बैक्टीरिया बा ब्लू ग्रीन एल्जी जे कि फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बैक्टीरिया सेलुलर इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड मेसोसोम टा होची तारा होची मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसो। ओके तापर मते को कि जनरली प्रोटिस्टा भितर को प्रोटिस्टा द नेम ऑफ द प्रोटिस्टा बा प्रोटिस्टा को जो क्लासिफाई कराई छि क्राइजोफाइट्स क्लासिफिकेशन कराई छि डाइनोफ्लाजेट्स यूग्लिनोइड स्लाइमोड प्रोटोजोन आको भितर को प्रोटिस्टाटा समुद्र रे रेड टाइड फॉर्मेशन करिया रे रिस्पांसिबल, नेम ऑफ द प्रोटिस्टा व्हिच कैन फॉर्म रेड टाइड इन द सी बा ओशन रे, दैट इज ओशन रे को बैक्टीरिया जे कि रेड टाइड फॉर्मेशन करे रे हेल्प करे कोन आंसर डाइनोफ्लाजेलेट्स। स्ट्रिक्टली मन रखिबो प्रोटिस्टा को क्लासिफाई कराई छि क्राइजोफाइट्स डाइनोफ्लाजेलेट्स यूग्लिनोइड स्लाइमोड एंड प्रोटोजोन एंड तांको भितर जो डाइनोफ्लाजेलेट रहिले डाइनोफ्लाजेलेट रो दीटा फ्लाजेला देखा जाए, गोटे होची लॉन्गिट्यूडिनल फ्लाजेला एंड अनदर वन इज ट्रांसवर्स फ्लाजेला। तो डाइनोफ्लाजेलेट रो देखिया गोन्यूलैक्स जे रहिला से होची समुद्र रे रेड टाइड बा जो जगह रे मन देखा जिवो समुद्र पानी पूरा रेड कलर देखा जिवो बा जो लहड़ी गुडा को पूरा कंप्लीटली रेड देखा जिवो आ सेटा भी बेले बेले टॉक्सिन वाला काम करे माछ मानो को मारिया पे। तापर मते को कि which protista is called as the connecting link between plant and animal, name of the protista which is called as the connecting link between plant and animal, plant and animal भितर को protista को connecting link कहा जाए, connecting link between plant and animal that is not fungi euglena, perfect Lakshmi Sonalika that is euglena कहा जाए connecting link between plant and animal because euglena can do photosynthesis when sunlight is present and when deprived of sunlight or sunlight absent it can act as heterotrophs. So due to the both type of autotroph and heterotrophs medium रे से काम करि पौछि it is called as that is connecting link between plant and animal, perfect। तापर जिबा अच्छा मते को कि जनरली को फंगी को कहा जाए सैक फंजी, नेम ऑफ द फंगी which is called as sac fungi, name of the fungi which is called as sac fungi, काहा को sac fungi बोली कहा जाए कौन आंसर name of the fungi which is called as sac fungi। fungi को जनरली क्लासिफाई कराय छै कोन Phycomycetes Ascomycetes Basidiomycetes and Deuteromycetes। तो को fungi को कहा जाए sac fungi, बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। Ascomycetes that is शशिरेखा सौरभ शिवानी स्वप्ना, तो सैक फंजी को जाए एस्कोमाइसेटिस। यूनिसेलुलर फंगी किए कौन आंसर हबो यूनिसेलुलर फंगी, यूनिसेलुलर फंजी का हुआ जाए ऑप्शन दउची साकारोमाइसिस सेरेविसाई ना साल्मोनेला टाइप, दिस इज ए बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर फंजी कौन हबो ना जदि हमें देखिबा म्यूकोर ना राइजोपोस ना अल्बुगो ना एगारिसस ना यूस्टिलागो, काहा को जाए यूनिसेलुलर फंजी ईस्ट साकारोमाइसिस सेरेविसाई ईस्ट जहा को कहा जाए यूनिसेलुलर फंजी, बढ़िया अछि। तापर मते को कि व्हिच फंजी इज एडिएबल, को फंगी को हमें खाई परिया, ऑप्शन दउची एगारिसस यूस्टिलागो प्यूसिनिया ना म्यूकर, व्हिच फंजी इज एडिएबल का को मैं खाई परिया, एगारिसस को अदरवाइज कॉल्ड एज मशरूम, यूस्टिलागो को कहा स्मॉट, प्यूसिनिया को कहा रस्ट एंड म्यूकर राइजोप्स अल्बो। को फंगीटा होची एडिएबल एगारिसस, परफेक्ट। एगारिसस होची जनरली मशरूम जहा को हमें खाई परिया। नेक्स्ट बा ओके इम्परफेक्ट फंजी का को जाए इम्परफेक्ट फंजी, who can say imperfect fungi का को जाए जार सेक्सुअल स्टेज ट्रू सेक्सुअल स्टेज आ मिलेनी, Phycomycetes Ascomycetes Basidiomycetes Deuteromycetes, which fungi is called as imperfect fungi, कौन आंसर सोनालिका लिपिका रोजालिन
ड्यूटरमाइसिड्स जशवंत, सबिता, स्वप्ना, शिवानी, पायल, अर्पिता, शशिरेखा, जीबी ब्लॉग्स। ओके द आंसर इज ड्यूटरमाइसिट्स। ड्यूटरमाइसिट्स को इम्परफेक्ट फंजी कहा जाए हैला। फाइकोमाइसिट्स को कौन कहा जाए? फाइकोमाइसिट्स को कहा जाए दैट इज अल्गल फंजी। एस्कोमाइसिट्स को सैक फंजी, बैसिडोमाइसिट्स को ब्रैकेट फंजी एंड क्लॉक फंजी, ड्यूटरमाइसिट्स को इम्परफेक्ट फंजी हैला। फंगी को क्लासिफाई करा जाए फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बैसिडोमाइसिट्स, ड्यूटरमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स को अल्गल फंजी, एस्कोमाइसिट्स को सैक फंजी, बैसिडोमाइसिट्स को ब्रैकेट क्लॉक फंजी, ड्यूटरमाइसिट्स को इम्परफेक्ट फंजी। पूरा मन रखा को हैला। चलो नेक्स्ट जीवा को क्वेश्चन रहला एटा यूकैरियोटिक सेल्स why there is an extensive that is compartmentalization of cytoplasm। कौन आंसर यार आंसर दियो। due to the presence of fiber, due to the presence of so many organelles, due to the presence of membranous organelle ना all of these कौन हबो? यूकैरियोटिक सेल्स रे कौन पई एक्सटेंड कंपार्टमेंट अछि? तो आंसर कौन हबो? all of these yes because presence of fiber अछि and due to the presence of so many organelles अछि as well as membrane bound organelle अछि, so all of these जब आंसर हो हैला जणा पड़ी होछि। ए क्वेश्चन एते किछि बुझियार नै। नेक्स्ट जीवा द केमिकल स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन दैट वाज ए बढ़िया क्वेश्चन, हजार थरे क्वेश्चन देखियो यदि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द केमिकल स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन दैट वाज डिड्यूस्ड टू इट्स पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर वाज मोस्टली डन ऑन व्हिच सेल। बा जदि तमे गोटे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो केमिकल स्टडी करे पे चाहूचो देन द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेल दैट यू शुड टेक कोन आंसर? बायोलॉजी रो रीजनिंग किछि अछि कि? बायोलॉजी रो रीजनिंग दैट मींस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई कैन अंडरस्टैंड आरबीसी और एरिथ्रोसाइट। अर्पिता तो आंसर कोन होबो? देखो सबोल भाई मन रखिबो जदि गोटे को गोटे सेल रो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करे पे चाहूचे तो हमको होची बेस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी करे पे सेल होची कोटा दैट इज से सेल टा होची आरबीसी। मन रखिबो काहे के ना जदि ह्यूमन रो आरबीसी देखिबा तो ह्यूमन रो आरबीसी रे दैट इज न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड ऑल्सो जदि देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया बा जनरली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट। सो निहत रूप रे जेहेतु ए सेल रे स्पेस बहुत अछि सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो स्टडी करिया पई मोस्ट एप्रोप्रिएट सेल टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज एरिथ्रोसाइट और आरबीसी। आरबीसी को नै के पांचटा क्वेश्चन पचारिया। आरबीसी रो लाइफ स्पैन केते हु कैन से लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी केते 110 115 120 125 140 लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। विभू किशोर नॉट डब्ल्यूबीसी आंसर इज आरबीसी 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी कोठी मरे बा कबर स्थान ऑफ आरबीसी कोठा हबो? एटा 120 डेज। देन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हु कैन से ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन परफेक्ट। देन जदि हमें गोटे प्लेन एरिया रे अच्छे एंड प्लेन एरिया को पोलर एरिया को जाउचे तो प्लेन एरिया को पोलर एरिया गले आरबीसी रो काउंट जनरली इंक्रीज होबो ना डिक्रीज होबो? द आरबीसी काउंट विल इंक्रीज और डिक्रीज जेतोला हमें प्लेन एरिया रो पोलर एरिया को जिया 3 मास रहि जिया 3 मत रहि गला पर जो एक्लामाइटाइजेशन होबो बॉडी रे गोटे शॉर्ट टर्म रो चेंजेस होबो तो आरबीसी काउंट इंक्रीज और डिक्रीज? आरबीसी डिक्रीज, आरबीसी विल इंक्रीज जदि हमें 3 मास रहि जिवा आरबीसी काउंट बढ़ी जिवो। सो आंसर मन रखो जेतेबेले हमें प्लेन एरिया रे रहउछो सडनली जेतेबेले पोलर एरिया को जिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वी विल फील दैट इज द अल्टीट्यूड सिकनेस बा हमको नाकर ब्लड बाहरिबो हमें जल्दी जल्दी हाली आइ जे मुंडो फुंडो बुलेबो हम पड़ी जे। बट जेतेबेले 3 मास कटे रहि जे बॉडी रे गोटे एक्लामाइटाइजेशन प्रोसेस हो नॉट एडाप्टेशन। एडाप्टेशन हो पई 100 वर्ष लागिवो बट जो शॉर्ट टाइम रे 3 मास भीतर बॉडी निजु को एडजस्ट करिवो बा बॉडी रो आरबीसी काउंट को इंक्रीज कर दबो सो दैट पहाड़ एरिया रे जो माने रहंती ताको गाल गुडा को रेड कलर देखा जाय। सो आरबीसी प्लेन एरिया रो पोलर एरिया को लोक मान भीतर जदी मेजरमेंट करा जिवो द आरबीसी काउंट इन द पोलर एरिया पीपल्स हैविंग मोर आरबीसी देन द प्लेन एरिया। जिवो नेक्स्ट ओके तो मते को कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आके भीतर कहार काउंट कमी गले ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होबो। कहार काउंट पूरा बहुत कमी गले ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होबो। कोन आंसर? शुभ दैट इज शुभाकांक्षी, पायल, लक्ष्मी प्रिया, सविता प्लेटलेट परफेक्ट प्लेटलेट। अच्छा मते को कि मेगा कार्योसाइट सेल मेगा
karyocyte cell is related to megakaryocyte cell टा को सेल को रिलेटेड प्लेटलेट ना डब्ल्यूबीसी आरबीसी मेगाकार्योसाइट सेल इज रिलेटेड टू को सेल को हमें जनरली मेगाकार्योसाइट टर्म टा कहा को रिलेटेड होउची हमें जानिचे प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट दिस इज द फ्रैगमेंटेशन ऑफ मेगाकार्योसाइट सेल तो आंसर इज प्लेटलेट तो मेगाकार्योसाइट सेल गोटे बोन मैरो रे गोटे लार्ज सेल मिले गोटे बड़ सेल मिले जहा को हमें मेगाकार्योसाइट सेल बोली कहउचे तो मेगाकार्योसाइट सेल रो फ्रैगमेंटेशन फॉर्म होची प्लेटलेट प्लेटलेट टा बोन मैरो बाहर बोन मैरो रे गोटे बड़ सेल होची मेगाकार्योसाइट रो फ्रैगमेंटेशन टा होची प्लेटलेट ओके नेक्स्ट बा इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड हैव देयर पोलर हेड फेसिंग जदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे लिपिड रो हेड टा क्वाड अछि आउटर साइड इनर साइड ना स्टेबल फेसिंग नाउ हियर सपोज दिस इज द सेल एंड सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे जदि हमें लिपिड रो लेयर करिबा तो लिपिड रो बाई लेयर देखा जाय तो दिस इज द लेयर नंबर 1 एंड दिस इज द लेयर नंबर 2 एंड गोटे लिपिड रो एटा होची हेड पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट एंड हेड पार्ट को हम कहउचे कोन पोलर हेड एंड एटा कहउचे नॉन पोलर टेल पोलर हेड एंड एटा होचे हाइड्रोफोबिक एंड दिस वन इज हाइड्रोफिलिक तो पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड तो आंसर कोन हो एंड नॉन पोलर टेल और हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड सो आंसर समस्ती करो ए अछि बढ़िया जीबी जीबी ब्लॉक्स लोपामुद्रा रुचिस्मिता परफेक्ट सो आंसर कोन हो दैट इज बढ़िया चलो अच्छा मते को कि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली सीन इन सेल्स एसोसिएटेड विथ द फ्रीक्वेंट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन रफ एंडोप्लाज्मिक सेल टा जनरली काहा को रिस्पांसिबल चाहे कहूचे हम बुझी परछो तो जेतिक पिला तुम अच्छो 21 रुचिस्मिता लोपामुद्रा जस्ट टिके क्लैरिफाई करो दैट तुम बुझी परछो ना बुझी परनो देन हमें अप्रोच किछि जदी चेंज करार अछि बा किछि नीड दरकार अछि केमि अप्रोच हम पढिया तो सेही अनुसार हम कहबा कि स्पीड ही जाउछि कोन आई होप क्वेश्चन डिस्कशन हो जाय तुम पढिथिबो जेतु एग्जाम तुमरा जे पाखी आसलानी तो नियत रुपे पढिथिबो तुम माने आई होप शिवानी थैंक यू कार्तिक रुचिस्मिता ओके यस अर्पिता पायल पढे तो आंसर कोन हबो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बढ़िया से जानि छे दैट इज न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हम जानि छे न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस रो आउटर मेम्ब्रेन रो गोटे ऑर्गेनेल बाहर ची वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ऑर्गेनेल न्यूक्लियस रो आउटर मेम्ब्रेन रो बाहर ची तो स्ट्रिक्टली मन रखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो जो ऑर्गेनेल टा न्यूक्लियस रो आउटर मेम्ब्रेन रो बाहर ची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ता देरे जदी राइबोसोम प्रेजेंट अछि ताको हम कहउचे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इफ राइबोसोम इज एब्सेंट इट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and as you know that rough endoplasmic reticulum is responsible to synthesize the protein so answer is protein and smooth endoplasmic reticulum is that is responsible for synthesis of lipid so smooth fine lipid and rough fine protein समस्त आंसर परफेक्ट अछि चलो कोन आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा smooth endoplasmic reticulum frequently associated with the synthesis of कोन हबो that is lipid बढ़िया बढ़िया जीवा नेक्स्ट गोटे सेकंड व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सिस्टेरनी रो डायमीटर कोन आगो फास्ट हम देखिया सिस्टेरनी कोन तापर डायमीटर देखिया सिस्टेरनी कोन हु कैन से व्हाट इज सिस्टेरनी कोन हम जे देखिबा दिस इज द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस रो आउटर मेम्ब्रेन बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो ए जो थ्रेड लाइक अपीयरेंस बा जो हमें जानि छे कन्वेक्सिस और कॉनकेव ट्रांस बाय जो फ्लैट लाइक और थ्रेड लाइक अपीयरेंस को हमें जनरली कहउचे सिस्टेरनी तो सिस्टेरनी रो डायमीटर पचार 0.5 to 1 मिलीमीटर माइक्रोमीटर कोटा आंसर वो दैट इज बी हबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था अर्पिता परफेक्ट अछि डी स्क्वायर सिस्टम 0.1 रो 1 सो आंसर इज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर हैला एनसाइट जदि हम देखिबा तो एनसाइट रे क्लियरली मेंशन करा छि द डायमीटर ऑफ सिस्टेरनी ए जो चेप्टा लाइक स्ट्रक्चर सिस्टेरनी को आजे तो आर डायमीटर होछि 0.5 रो
1 हैला मन रहइबो ओके ठीक अछि पढा चल आ गोटे कथा एठी मन रखिबो सिस्ट्रेन जगह जदी क्रिस्टाई देथिबो क्रिस्टाई कोन सी तो गला सिस्ट्रेन क्रिस्टाई कोन आमे जानि छे सपोज दिस इज द सेल एंड सेल भीतर सपोज एटा होची सपोज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सपोज माइटोकॉन्ड्रिया एटा होची इनर मेम्ब्रेन आमे जानि छे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन वन एटा होची आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन so inner membrane जो इनफोल्डिंग्स रहिला द इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रो इनफोल्डिंग्स को कहा जाय क्रिस्टाई हला सिस्ट्रेन होची टर्म रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द क्रिस्टाई द टर्म इज रिलेटेड टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सो आंसर होबो ओके माइटोकॉन्ड्रिया इनफोल्डिंग्स कार्तिक लक्ष्मी अर्पिता लोपामुद्रा शशिरेखा संदीप ओके convex cis and concave trans बढ़िया नेक्स्ट जीवा cis and trans phase of Golgi body यार Golgi body रो cis phase और trans phase कोटा convex cis and concave trans Golgi body रो cis और trans phase कौन होबो Golgi body suppose this is nucleus and this is endoplasmic reticulum and suppose this is that is Golgi body तो Golgi body रो गोटे फेज थाए जो फेज टा टुवर्ड्स द सपोज जो फेज टा टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटा को जे फॉर्मिंग फेज बा सीस फेज बा कन्वेक्स और सीस और फॉर्मिंग सो सीस होची कन्वेक्स एंड ट्रांस होची द फेज अवे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज कॉन्केव फेज और मैच्योर और कॉन्केव और ट्रांस ठीक है वो समझ आंसर आई थिंक ठीक रेडी ओके कन्वेक्स एंड कॉन्केव सो आंसर होची ए नेक्स्ट जीवा व्हिच फेसेस ऑफ अ गोल्गी apparatus रिसीव द मटेरियल पैकिंग इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जनरली गोल्गी बॉडी रो को फेसटा मटेरियल को रिसीव करबो ऑलरेडी हम जानि छे सपोज दिस इज द कलर चेंज कर दो आई होप सपोज दिस इज द सपोज सेल and cell ଭିତରେ suppose nucleus and suppose endoplasmic reticulum and suppose एटा Golgi body तो ए कोडा फॉर्मिंग फेज टा मटेरियल को रिसीव करिवो तो कोन हो फॉर्मिंग फेज को हमें कन्वेक्स बा सीस बोली कहउछे तो कोन आंसर सीस हो आई होप यस समस्त आंसर एएफसी बट लोपामुद्रा तमरा आंसर ट्रांस तो ट्रांस नो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज द फॉर्मिंग फेज दैट इज सीस हैला तो ए जो फॉर्मिंग फेज रहिला एई फेज टा ही टिके बड़ डायग्राम करले सपोज एटा होची Golgi body तो Golgi body रे जो फॉर्मिंग फेज रहिला सपोज एटा ता फेज टा ये जो फॉर्मिंग फेज टा रिसीव करबला एटा तार एपड साइड होची मैच्योर फेज बा ट्रांस फेज बा कॉन्केव फेज एपड होची फॉर्मिंग फेज और सीस फेज और कन्वेक्स फेज ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अच्छा Golgi body के डिस्कवर करतले कैमेलियो Golgi केते डेट रे के कहि परियो कैमेलियो Golgi body को को डेट रे जनरली डिस्कवर करतले कौन आंसर कैमेलियो Golgi को डेट रे Golgi body को जनरली डिस्कवर करथिले ऑप्शन दोछि 1998 1898 1873 1864 कौन आंसर कैमेलियो Golgi आंसर कौन होबो 1858 1998 कौन आंसर 1898 परफेक्ट 1898 रे कैमेलियो Golgi body को डिस्कवर करथिले सेल भितरे सो अकॉर्डिंग टू द नेम कैमेलियो Golgi द नेम ऑफ द Golgi body रो नाम होची Golgi दियाला ताको नाम अनुसार चलो नेक्स्ट Golgi apparatus इज एन इंपोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Golgi apparatus टा गोटे इंपोर्टेंट साइट कोन फॉर्मेशन करिया रे कोन आंसर हरप्रिया शिवानी Golgi apparatus is an important site for the formation of protein and lipid glycoprotein and glycolipid कौन फॉर्मेशन करे प्रोटीन और लिपिड आसीबो बट फॉर्मेशन होबो कोन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड स्ट्रिक्टली मन रखिबो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो रफ पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटिस्ट रफ पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस कला स्मूथ पास लिपिड सिंथेसिस कला बट Golgi body देखि क्रॉस कला गले एटा ग्लाइकोप्रोटीन होबो एटा ग्लाइकोलिपिड हो तो Golgi body is responsible to produce glycoprotein and glycolipid the next
which structure is formed by the process which structure is formed by the process of packaging in Golgi body, that is को structure टा Golgi body रे packaging रे help करे, which structure is formed by the process of packaging ओ Golgi body रो packaging process द्वारा को structure टा formation हो जाए, ribosome, protein granules, lysosome ना centrosome, को आंसर कौन हबो सी आसुची समस्तिଙ୍କର कार्तिक सोनालिका सी परफेक्ट। देखो आमे स्ट्रिक्टली मन रखिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेली काहे को जाय जो सब ऑर्गेनेल उडा परस्पर से कोऑर्डिनेट वे काम करंती किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो लाइसोसोम और वैक्यूल रो ओरिजिन जो देखिबा सेमानकर ओरिजिन होची बोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी इज रिस्पांसिबल टू प्रोड्यूस लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो गोल्गी बॉडी रो पैकेजिंग प्रोसेस द्वारा को ऑर्गेनेली तयारी हुए लाइसोसोम। तो स्ट्रिक्टली मन रखिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल एमानकु एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेली कहा जाए as their functions are correlate to each other, so these are called as endomembrane system organelle। याकु नै क्वेश्चन पचारि परिबो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेली किया भितरु आंक भितर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेली किए नुह निहाती पचारि परिबो। आ गोटे कथा मन रखिबो जेतिके सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेली रहिले समस्त होचोनी सिंगल मेम्ब्रेन, ऑल द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेली आर सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन किए ना सेतक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेली रहिले और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेली किए ना जो मानकर फंक्शंस है दैट इज को रिलेट टू ईच अदर। सो स्ट्रिक्टली मन रखियो लाइसोसोम टा फॉर्मेशन होची बाय द पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडी। देन नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, आका भीतर कोटा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नुह, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइगेज। कोन आंसर शुभलक्ष्मी, अर्पिता को रिलेटेड और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम परफेक्ट, अंकिता सी, स्वप्ना बी, विभू किशोर लाइगेज या राइट लाइगेज। एंड लाइगेज ता होची कोन कहला को कहा जाय मॉलिक्यूलर ग्लू, लाइगेज को कहा जाय मॉलिक्यूलर ग्लू। व्हाई द लाइगेज इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू? जदि हमें देखिया बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस रे जदि हमें कोनोसी वेक्टर रे यदि हमें डीएनए को लाइगेट करिया को चाहूचे बा गोटे डिजायर जीन को लाइगेट करिया को चाहूचे तो डीएनए को डीएनए भीतर जोड़िया पई काम करा लाइगेज ताको सेति पई को जाय मॉलिक्यूलर ग्लू बा मॉलिक्यूलर अठा। लाइगेज को कहा जाय मॉलिक्यूलर अठा बा मॉलिक्यूल लेवल रे डीएनए को जोड़िया पई हेल्प करे। तो लाइगेज नो आंसर। नेक्स्ट जीवा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर एक्टिवेटेड इन व्हिच पीएच? कोन को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज एक्टिवेटेड शुभलक्ष्मी पटनायक सर लाइव क्लास टा केते बेले होची? देखो लाइव क्लास तमरो परफॉर्मेंस ऊपर जदी तमरो दैट इज तमरो कमेंट आसीबो कि डेली लाइव क्लास करिया पई बीडी रिलेटेड नियत रूप रे लाइव क्लास डेली आसीबो। तो डिपेंड करे कि केते पिला जॉइन होचन एंड पिलांकर इंटरेस्ट कोन अछि, हाउ इज योर इंटरेस्ट, इट विल टोटली लाइव क्लास विल डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। तो तम मानकर इंटरेस्ट केते अछि ता ऊपर डिपेंड करो सो से डिसाइड करा जिवो कि एवरी डे लाइव सेशन रखा जिवो या ना रखा जिवो को कोन हबो। ओके कौन आंसर दैट इज एसिडिक पीएच परफेक्ट तो जणा अछि। ओके नेक्स्ट जीवा सोनालिका आज फास्ट यस आज फास्ट क्लास दैट इज बीड रो आज प्रथम क्लास हैला। तो सब जिंस डिपेंड करो तुम जहा जहा सिलेबस अछि तो गोटे बाय गोटे वीडियो आसीबो जदी तुमरा रेस्पोंस ठीक है। सो तुमरो दैट इज क्लास रे एंड परे तमे कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबो कि तमे इंटरेस्टेड अछि दैट यू कैन कमेंट दैट यू आर इंटरेस्टेड फॉर एवरीडे क्लास। सो से रिगार्डिंग रे कमेंट देखि कि डिसीजन निया जो नेक्स्ट चलो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एसिड या सइला तापर होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आका भीतर कोटा जनरली डाइजेस्टेड करा जाय परिबो नै हाइड्रोलाइटिक एंजाइम द्वारा डीएनए, ग्लूकोज, इम्यूनोग्लोबिन, इंसुलिन। Which of the following cannot be digested by hydrolytic enzyme? Hydrolytic enzyme द्वारा कोहा को डाइजेस्टेड करा जाय परिबो नै डीएनए, ग्लूकोज, इंसुलिन। कोन आंसर डीएनए ना दैट इज डीएनए को डाइजेस्ट करा पे डीएनएस दरकार है। सो आंसर होची डीएनएस डीएनएस। नेक्स्ट जीवा
hang gala I think. Okay, ribosomal RNA is actively synthesized in ribosomal RNA বা rRNA টা কোউठी actively synthesized होउची ribosomal RNA कोउठी synthesized होउची ribosomal RNA is actively synthesized in as you know that is nucleolose. Nucleolose are the tiny structure which is present in the nucleus. One second please. That is nucleolose. Next iba and nucleus भितर cytoplasm nucleus is called as nucleoplasm. One second please. Okay, what is the true about ribosome? Ribosome को नेकी कोटा true देखो जल्दी जल्दी छाड़ दवा. That is शुभ सर मु OUT entrance में preparation. Yes, that is जो भी entrance में तुम preparation हुआ so तो किसी भी problem नहीं so नियत रे तो मन रखिबो so कौन हो तो जो भी entrance preparation हुआ question वाला important है ला तो prokaryotic ribosome are ATS where prokaryotic ribosome are ATS where AS stand for cellular. These are the composed of which is true about ribosome. Ribosome को नेकी कोटा true कौन आंसर true about ribosome. True about ribosome. Ribosome को नेकी कोटा true कौन आंसर को true about ribosome. हाँ प्रथम आसिला the prokaryotic ribosome are ATS एटा तो भूल prokaryotic ribosome that is 18 भूल. These are composed of ribonucleic acid and protein, RNA and protein. These are found only in eukaryotic cells. Ribosome both prokaryotic cell, eukaryotic cell मिले. These are self-replicating intron of some RNA. ताले कौन आंसर? That is which of the following is true? Self-replicating and true पचाची RNA and protein को नहीं तियारी. Ribosome that is made up of composed of ribonucleic acid, RNA and protein. RNA and protein मिसिले ribosome. So these are self-replicating intron. एटा भूल. Ribosome self-replication करी पारे नहीं. हमें जानी बा that is self-replicating capacity DNA रे अछि. So not ribosome. Yes, अंकिता बढ़िया अछि. चलो. Nuclear membrane is absent in. Nuclear membrane कहाँ absent? Nuclear membrane is absent in. कौन आंसर? I think एटा last question. को एते क्वेश्चन अछि तो सारी दवा एठी क्वेश्चन करी की कौन रहिला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा कोतरे एब्सेंट कोन हबो पेनिसिलियम टा होची गोटे फंगस टा तो एटा हबोनी दैट इज एगारिसस होची मशरूम गोटे फंगस टा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहार एब्सेंट जार न्यूक्लियस एब्सेंट बा न्यूक्लियर वेल डिफाइंड हो न्यूक्लियस कहार वेल डिफाइंड हो आमे जानि छे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो होची कहार दैट इज जो देखियो प्रोकैरियोटिक सो नोस्टोक एंड एनावेना दिस इज द आंसर हां तो डी समस्त आंसर डी बढ़िया देखो जहां भी तुम परफॉर्म करछो समस्त आंसर बढ़िया अछि तो गोटे कथा मन रखियो लाइफ रे बहुत इजी जिंस में हमर सेतबेले मिस्टेक हो जदी हमर लैक ऑफ प्रैक्टिस थिवो तो हमकु डेली बेसिस रे प्रैक्टिस करा दरकार जदी हमें टारगेट करिया 100 टा दिन को केमिस्ट्री प्रैक्टिस करिया 100 टा दिन को फिजिक्स प्रैक्टिस करिया 100 टा दिन को बायो प्रैक्टिस करिया तो 100% हम प्रैक्टिस एते पीक लेवल जाइतो हमें देखु कहया एगारिसस को मशरूम क्लामाइडोमस को एल्जी फटाफट हमें कहया कि दैट इज माने इमीडिएटली देखु हमर मन पड़ जिवो कोन क्वेश्चन पचारछ एंड एग्जामिनर कोन चाहूची सो सबोळ पई निहाती मन रखिया पड़िबो क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करे दरकार जेति कि निदर भी बावळी चावळी हबो कि को क्वेश्चन हमर दैट इज पचारि होची तो सबोळ पई स्ट्रिक्टली मन रखिबो ऑप्शन देखिबो तो तम माइंड को आसी जा दरकार एई बुला पर एते क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देओ कि कोनसी क्वेश्चन तम छुट न बाहर क्वेश्चन आसीला पूरा माने पूरा टॉप लेवल क्वेश्चन आसीला सर बट ए जनरल क्वेश्चन वाला जो एग्जाम पचाउची एगुडा क्वेश्चन निहाती आसे दरकार चलो नेक्स्ट जीवा तम भाबुतो कि सारे बहुत कथा गपुंती तो नेक्स्ट जीवा सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ने की कोटा इनकरेक्ट एंड करेक्ट पचाला Na plus and K plus ion move across the cell membrane by the passive transport bull active transport Na plus K plus ion that is proteins make up the 60 to 70% of the cell membrane then जो देखिबा
lipids are arranged in a bilayer with polar heads towards the inner part. Whole कौन पचारछि तो करेक्ट पचारछि लिपिड रो पोलर हेड आउटर साइड रहा कथा द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज फोकस्ड बाय सिंगल एंड निकोलसन करेक्ट फ्लूइड मोजाइक मॉडल हो देथिले सिंगल एंड निकोलसन परफेक्ट अछि प्रोटीन होचे 60 to 70% नो दैट इज लिपिड है 60 to 70% एटा बोल Na+ टा एक्टिव सो आंसर होचे डी थैंक यू विभू किशोर नेक्स्ट ए मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एटा तुम आसीबा ए क्वेश्चन हम जो देखिबा तम पई होमवर्क रहला ए क्वेश्चन टा होमवर्क रहला तम पई तो क्वेश्चन मु देई दोची होमवर्क पई लिखि दोची जेमति कि तमे कमेंट करि परिबो एक नंबर क्वेश्चन एटा होमवर्क दुई नंबर क्वेश्चन होमवर्क एटा एक नंबर दुई नंबर होमवर्क देन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्युमुलेट इजी क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया कोडी प्रोटॉन एक्युमुलेट हुई तीन नंबर होमवर्क देखो तीन नंबर होमवर्क एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल कोटा नो ऑलरेडी हमें डिस्कशन करछे को माने सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल एटा होमवर्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल कोटा नो एटा एई पांचटा तम पई होमवर्क रहला तो आई होप तुमको सेशन भल लागिथिबो एंड जो माने इंटरेस्टेड अछ कि सेशन आगु चालू तो नियत रूपे तुम कमेंट से अनुसार दबो एंड मु देखिबे ए जो पांचटा क्वेश्चन दियाला तार आंसर देइथिबो ऑल द वेरी बेस्ट पीडीएफ कोड पाइबो कार्तिक यस जदी if you want this pdf then pdf जदी तो कमेंट करो then I will contact you then pdf तुम शेयर कर दियो ठीक अछि शिवानी थैंक यू तो थैंक यू एवरीवन तुम जॉइन कलो एंड आई होप तुमको किसी ना किसी क्वेश्चन नियत रूपे हेल्पफुल करिवो एंड बोल से प्रैक्टिस करो एंड क्लास डेली डिपेंड करछि तमरो कमेंट्स ऊपर एंड तमरो इंटरेस्ट ऊपर मुझे ऑलरेडी कहली सो कमेंट करिवो से अनुसार एंड तार आंसर भी दबो थैंक यू ओके चलो ऑल द वेरी बेस्ट गुड नाइट विश्वनाथ रीजनिंग रो क्वेश्चन यस आई होप कि रीजनिंग क्वेश्चन जल्दी आसीबो तो रीजनिंग रो क्वेश्चन बट आसी जिवो मे भी सबु रो क्लासेस हबो गुड नाइट ओके गुड नाइट अर्पिता थैंक यू पायल ओके चलो यस विभू किशोर तुम कमेंट करो सो दैट डेली क्लासेस करिया आ गोटे कथा मन रखो डेली पूरा प्रबल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जेति के तमरो बीड रे सिलेबस रहिला पूरा भरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आराम से मन रहिबो आ क्वेश्चन प्रैक्टिस रो लैक हो माने एग्जाम रे फटाफट क्वेश्चन जो मन पड़िबोनी हला चलो